The story was not about the love story, like what happens after they fall in love. The story was the process of falling in love. Many teenagers believe these days that falling in love means being together, going out, and posting photos on Instagram and flaunting it. That is not relation. The message that I wanted to give, the main message that I wanted to give through this series is the actual process of love. Base strong hona chahiye. When you know that person, when you feel like you like him or you like her, and then you feel like you want to be with that person, and then despite you not being with them physically, you actually feel like you're there and you help them, they help you in your ups and downs, your happiness and your sorrows, they are with you. That is what the actual love is. So the process which nobody talks about, nobody even acknowledges कि ये एक प्यार हो सकता है. For me this is love. For me this is the beginning of love, and love in lockdown is that story. Well, it was unexpected and surprising for me. Actually, मैं नक्षत्र को इंस्टा पे फॉलो करता था, तो एक दिन मैं मीटिंग में था ऑफिस का, और सडनली उसका टेक्स्ट आता है कि हाय, डू यू हैव एनी एक्टिंग एक्सपीरियंस. तो मेरे पास कुछ मेरा टिकटॉक के वीडियो पड़ा हुआ था. And Saikit sent me 2 of his TikTok videos, and trust me, both videos that he sent me was everything why I should have rejected him. Because he sent me some song where he was lip sync was all over the place. He was not doing it right at all. बोला कि हम रात को बात करते हैं फोन पे. तो रात को he did explain everything to me, and then he asked, do you have anything to ask. तो मैंने उसको पूछा कि am I selected. So he said yeah, let me take. Then उसके बाद shooting start हो गया, and that's how I got the project. So yeah, it was surprising and unexpected for me. But I was confident about 3 things. 3 things worked in his favor a lot. That first, he was enjoying whatever he's doing. He knew that he was doing mistakes, but he was enjoying it. Second thing, he's very sincere. He listens to you completely. He understands things. If he doesn't understand, he'll ask you the questions and he'll try to know the best. And the third thing I was confident about Saikit is not about Saikit, it's about me. I knew that I could be a taskmaster if I have to be, and I can get it done from him. And the most important thing, that he is open to his family and friends that worked for me. He stays alone, he could cook, so he was everything that could fit the प्रोजेक्ट जब मुझे ऑफ़र हुआ था, आई थिंक उस टाइम में हैप्पी से ज़्यादा आई थिंक नर्वस था, क्योंकि मतलब तब मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. Neil is very interesting. I had followed Neil for a long time and loved his creativity, and I always knew this guy could do emotional roles very well, though he wasn't very sure. But the title montage that you see, the names and our photos that come before every episode, we had made that way before approaching Neil. And we had mentioned the name Neil Ranawat. Neil Ranawat का नाम पहले ही mention किया था, before even asking Neil that if you would like to do this. So we had made it even without asking him, and I just said, Neil, this is the concept, and I sent him the video. See, your name is there. Would you like to do this? And I knew that, I was confident he will say yes, and he was excited and nervous too, and it went very well. तो नक्षत्र ने मुझे बताया कि हमने तुम्हारा नाम ऑलरेडी ऐड कर लिया है प्रोमो में, तो मतलब उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं कर पाऊँगा ऐसा करके. Overall experience was amazing, but it looks easy for you that we keep our cameras and we shoot. It's not like that. It was one of the most difficult projects to execute because I wasn't present there, physically at Neil's place or at Saikit's place. So I used to do a video call to them, and I used to fix the frame, leave some border, ऊपर थोड़ा नीचे छोड़ा, ऊपर frame आएगी तो सर कटना नहीं चाहिए. Or the basic small things, and for each scenes we used to do that. Overall experience was learning experience. मुझे तो स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता था कि कैसे डायलॉग बोलना होता है, कैसे कैमरा सेटअप करना होता है, तो सब कुछ नक्श ने ही सिखाया कि कैमरा यहाँ पे रखो, वहाँ पे रखो, कैसे क्लोजअप लेना होता है. So it was learning experience for me. These guys used to send me 3-4 clips, sometimes 1-2 perfect shot. Then I used to select one, then we used to upload on Drive. We had made 2 Drive folders, and from there I used to download
the original quality, and then we used to edit and all those things. So it was different experience, but not easy. But it made our lockdown pretty interesting. एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मैंने मतलब हर टाइम टिकटॉक में आई थिंक सब कॉमेडी वीडियोस से बनाता हूँ, ऐसे सीरियस मोड में कभी वीडियोस नहीं बनाया, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। तो और जो मतलब रेलवे स्टेशन का वाला शूट था वो तो हमने लॉकडाउन के बाद जाके शूट किया था, और उसके लिए मैं अपने दोस्त को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे शूट करके दिया उसके फ़ोन से, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना अच्छा कैमरा नहीं है। तो with Nakshatra, it's like most comfortable, क्योंकि मैं तो उसको हमेशा इरिटेट करता रहता था, वो स्क्रिप्ट भेजता था मुझे जिसमें भी डाउट होता है, अरे इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, एंड ही नेवर स्टॉप्ड मी। तो उसने और कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मुझे बाउंड भी नहीं किया कि ऐसा करो ऐसा करो। ही जस्ट सेड कि जैसे तुम हो वैसे ही रहो। तो जो लोग मुझे बोल रहे कि योर एक्टिंग वाज सो नेचुरल, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सो या, it's a comfortable experience with him. नक्षत्र की बात करूँ तो आई थिंक मतलब मुझ में खुद में मतलब मुझको जितना कॉन्फिडेंस नहीं था उसको मुझ में कॉन्फिडेंस था। तो आई थिंक उसने मुझे हर जगह हेल्प किया कि मैं कैसे शूट करूँ कैसे करूँ। मुझे मतलब पहले मतलब मुझे डर लग गया था कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन उसको मैं हर टाइम कॉल कर मतलब जब भी शूट करता था उसको मैं कॉल करता था कि मैं नक्षत्र ऐसे करो ऐसे करो। तो वो मतलब एकदम कोऑपरेट किया मुझे, वो अच्छे से मुझे समझा दिया सब कुछ। You know, as a director and actor, it's my responsibility to bring out the best from my artist and my co-actors. क्या होता है कि when your project is over, they should be getting more work. They should be established as an artist. This is my responsibility. So I always try to give them the best. Whatever उनका screen time है, उनमें से बेस्ट एक्टिंग कैसे निकालनी है, उनको कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है। हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि तुम अपने आप को कम लेते हो, अच्छे डायलॉग उनको देते हो, you give them the attention. This is what I feel. It's a responsibility of me, to build more career artist. ना जस्ट कि मैं अपने आप को establish कर रहा हूँ, बट साथ ही साथ अपने आप को भी करो, but you need to establish them also, that when you move on to other projects, they are not left behind. उनको कोई इग्नोर नहीं करेगा कि उनका एक चीज खत्म हुआ। They must be getting some new offers, and I hope that they will prove them right and अपना talent को prove करेंगे and they'll get more work. As a Bengali, I feel very proud and lucky too कि मुझे इस मतलब इतने सारे लोग हैं उसमें से मुझे सिलेक्ट किया। मेरा कैरेक्टर भी तो ऐसा ही है कि वो बंगाली है और प्राउड है, और इट्स द फाइटिंग सीक्वेंस एंड ऑल सेज एवरीथिंग। एक्चुअली त्रिपुरा में मतलब मेरे जितने भी गे फ्रेंड्स हैं मतलब वो लोग मतलब कभी भी अपने आप को इतनी ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उनको हमेशा एक डर रहता है। लेकिन मतलब मैं पता नहीं बचपन से ही मतलब कुछ आई थिंक ओपन माइंडेड हूँ, तो आई फील प्राउड कि मुझे देख के त्रिपुरा के बाकी मतलब मेरे जो दोस्त थे उनमें भी थोड़ा मतलब लाइक उनको भी शक्ति मिलेगा कि नहीं हम जो है वैसे ही खुद को रिप्रेजेंट बेस बढ़ता जा रहा है। My base is increasing and I'm getting people from different parts of not just India but across the world. If you go to this part, India is pretty different. If you go to part, struggles, stories, languages, cultures, pretty different. And it's important for me to go beyond cities, especially in my stories, because struggles of city guys and struggles of guys from small towns and villages are pretty different. को represent करना मेरी जिम्मेदारी है. So one thing I've decided from this project onwards कि no matter which project I do, I must represent a different geographical section in my new project. So I did, like I said, I decided to show West Bengal, and then I wanted Northeast, so because Northeast is often ignored. You hardly get to see Northeast in LGBTQ projects. Very few people show that. So through Nil's story, though it was one, I decided to show Tripura representing northeast of India and West Bengal, and of course Mumbai, my side of the story. From this project onwards, you get to see different. I get the messages from people from South, from Gujarat, from North. Yeah, you will all get representation in all my projects going ahead, and this is one must-have responsibility for me that I've realized that I should give representation to all the sections, and they should have a story to feel this is my story, this is what represents me.
क्योंकि ये मेरा डेब्यू सीरीज था, तो मेरे तो सारे सीन्स मेरा फेवरेट था, पर मुझे सबसे ज्यादा 2 सीन पसंद आया, मतलब करने में मजा आया। द फर्स्ट वन इज जो सेकंड एपिसोड में जो लास्ट सीन है जिसमें सिर्फ मुझे एक्सप्रेस करना था। कि आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर समथिंग, तो वो मुश्किल था पर फाइनली हो गया। और दूसरा जो पसंद आया मुझे सबसे ज्यादा करने में वो था वीडियो कॉल वाला, जिसमें मैं इंद्रनील वाला झगड़ा कर रहा हूँ। बीइंग अ बंगाली, we are proud to our pronunciation, so that's why it was my favorite. Hi Indranil, I need a suggestion from you. Who is Indranil here? Of course you. No, I'm not Indranil, I'm Indronil. But I mean, what's the difference? Spelling तो same ही होगा, right? Huge difference. The best thing that Love in Lockdown gave me is one thing that I can't express how happy it made me. My first introductory scene, first episode where I'm talking to my boss and my mother calls and I just say the word I'm busy, and you know what? My mother passed away 3 years back. She was ill a couple of years before that. So I think I did not speak with my mom for 4 to 5 years, and I still have goosebumps when I say this. So when I spoke with that, on call with her, or especially, thank you sir. आई एकदा कट केलं की समजत नाही का मी मीटिंग मध्ये आहे म्हणून. अगं आई पण मी बिझी आहे आता. Then we decided to add this scene to the last episode where I had my birthday and my parents called me. It was very natural, but at the same time, it's pretty simple scene for you. But imagining your mother who is no more and doing that scene as if she's there on the call, it was emotionally tough for me. And side by side, it was surreal for me. It made me so happy. My heart was at peace that I finally get to do this. वाढदिवसा दिवशी पण सुनावणारच का? हो ग बाई, नक्की. आणि घरी येताना लॅपटॉप आणि ते ऑफिसची कामं घरी घेऊन यायची नाहीत बरं का? काही कामाचा आणणार नाहीये. लॅपटॉप वगैरे सगळं घरीच ठेवेल आणि म्हणजे सगळा वेळ तुमचा. थांब बाबांशी बोल. So I just want to say quickly, those you have your mothers, don't take it so specially. मम्मी को कॉल करना है, चलो हो गया खत्म. You speak with your mom, you don't feel it special because you don't realize it because you have her with you. When she's not there in future, you will realize the importance to cherish. Give her love, give her respect, and you will realize it once you are at my place. But this Love in Lockdown gave me this one special feeling. Again, I got to enjoy and talk to my mom. This was, of course, my favorite scenes of the year. Have been offered a new project, but अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, काम चल रहा है उसमें, तो जैसे ही कुछ फाइनल होता है। और हाँ, अगर किसी को मेरा काम पसंद आया तो और मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो they can DM me on Insta. नेक्स्ट मैं क्या करूँगा? आई थिंक मैं नेक्स्ट कुछ सोचता नहीं कि इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा। मतलब जो होना होगा ना वो होता जाएगा। मैं तो वीडियोस बनाता ही हूँ, वो अपलोड करता ही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो जो होना होगा वो हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट में ऐसा सोचना है कि इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद वो करूँगा। लाइक हो जाएगा कुछ भी जो होना होगा। If you ask me सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है मेरे लिए कैमरा पे करना, like what's most challenging thing or role for me to do, I would say romance. I'm not at all a romantic person, though you love seeing me in Agal Bagal doing romantic scenes with Rohan and now with Saikat. It looks natural, thank you, it's a compliment, but trust me, I'm so uncomfortable doing romantic scenes. I'm being very honest. I am not a romantic person at all. You find me romantic because maybe I get into character and I enjoy that, but I find it very difficult. So romance is not my type of thing. I want to take a break from that. I want to take break from this activism thing. Yeah, I would like to give messages and good signs, but at the same time, I am tired of being the good boy. I'm tired of being that ideal person, who can give good stories, feel good stories, because then I limit myself as an actor and I do injustice with myself as an actor. I need to do something which I can challenge myself as an artist. I can challenge my talent and I can say I can do this too. I can do that too.
will not see me in typical Nakshatra. You will find me something different role, different avatar, and it's gonna be far away from messages and activism. Let me tell you, because the story could be pretty different and something that you never thought I can do. So yeah. Fans, yay! I have fans now. Actually, just kidding. So lots of love for them. जिन्होंने भी इस सीरीज को पसंद किया. Not only for them, जिन्होंने भी बताया कि कहाँ गलत था, कहाँ सही था, so that कि in future के मतलब जो भी मैं काम करूँ उसमें ठीक तरह से और अच्छे से कर सकूँ. So thank you so much and lots of love and keep watching LIL and sharing with your friends and family. जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग हो जो मुझे इंस्टाग्राम पे खुद मैसेज करके तारीफ़ कर रहे हो, फिर थ्रू नक्षत्र भी मुझे बोला कि सब मतलब मेरे मतलब तारीफ़ कर रहे हो, तो मतलब सबको मतलब दिल से थैंक यू. I want to say thank you so much. बहुत शुक्रिया people. आपने मतलब I was expecting a good response, but इतना response अच्छा मिला है. मुझे लगा था अगल बगल कोई मिल सकता बिकॉज उसमें एक अलग तरह का मज़ा है, you know? But लविंग लॉकडाउन जैसे चीज़ों को प्रोजेक्ट्स को जो लॉन्ग डिस्टेंस पे बनाया जाता है, जहाँ पे एक्टर्स का कांटेक्ट नहीं है, सेक्स सीन्स नहीं है, नॉट इवन अ किस इज देयर, स्टिल उसको अच्छा रोमांस मिल रहा है. इसका मतलब वी एज अ कम्युनिटी इज इवॉल्विंग. हमको उसके आगे जाके भी काफ़ी स्टोरीज पे हम ध्यान दे रहे. हमें अच्छा लग रहा है ऐसी स्टोरीज देखने के लिए, यानी ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चलो मतलब ऐसे करके भी लोग पसंद करने लगे हैं. सो लाइक थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड कीप गिविंग योर सपोर्ट एंड लव फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट.